Asset Management or Working Capital Management Part 1. Working capital is actually that part of our investment which is made in current assets. Why do we need working capital? Whenever we make investment in a business, a major chunk of our investment goes into capital assets, यानी जिसका हमने पहले जिक्र किया था, property, plant and equipment. But then to utilize those property, plant and equipment fixed assets to make profit, we have to put money in what is called working capital. Working capital has got two definitions. One is the gross working capital, another one is the net working capital. Gross working capital is simply all the current assets. The value of all the current assets is what is called the gross working capital. And if we subtract the value of current liabilities out of our current assets, then what we get is net working capital. What is the importance of this working capital? Working capital kaha jata hai ki it is like blood in the body of the business organization. जैसे कोई जिस्म अगर उसमें खून जो है वो मूव नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि ये जिस्म जो है मुर्दा हो गया. इसी तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट नहीं होगा तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी डेड हो जाएगी. सो विदाउट वर्किंग कैपिटल देयर इज नो वे दैट अ बिजनेस कैन बी ऑपरेटेड. नाउ this amount that we generated from different sources would go into different components of working capital. And there are three major components, which are inventories, the stocks, that's what we call them, and receivables. And the third one is cash or cash equivalents. Inventories mean that the stocks which are kept in the business for the purpose of resale, if business is into what is called a manufacturing or trading business, तो वो कुछ चीज़ें खरीदता है और बनाता है और उनको आगे बेच देता है. There are some products. So there will be inventories in that organization. वो stocks होंगे जो कि raw material के stocks भी हो सकते हैं, work in process यानी incomplete goods के stocks भी हो सकते हैं, और कंप्लीट गुड्स जिसको फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है उसके स्टॉक्स भी हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ इन्वेंट्रीज वो भी होती हैं कि जिनको इंटरनली कंज्यूम किया जाता है, जिनको हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स का नाम देते हैं. इसमें भी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होता है. इसके साथ साथ हमारा वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट होता है. अकाउंट रिसीवेबल्स क्या हैं? जब हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं और ये सेल जो है ये कैश के ऊपर नहीं है बल्कि क्रेडिट के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आज हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इसका रिटर्न, इसका कैश हमें फ्यूचर में मिलेगा. और जब तक ये कैश हमें नहीं मिलता उस वक्त तक दिस अमाउंट इज केप्ट एज रिसीवेबल्स. सो इफ वी लुक एट द रिसीवेबल्स, इट इज एक्चुअली or investment that we have given to somebody for a certain period of time. It is an asset. It is an amount which will be recovered in the future. So अगर हमने बिजनेस करना है तो हमें क्रेडिट पे सेल करनी होगी, और क्रेडिट पे सेल करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल अराइज होंगे और हमारा पैसा इस वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट में इन्वेस्ट हो जाएगा. Similarly, we also need cash. We always need cash as a part of business organization, because we have to pay our expenses, we have to pay our salaries, we have to pay the installments of our loans and other things. So cash is extremely important. But how much cash should be kept in the business? Because more cash means that it is uninvested. जितना cash हम ज़्यादा hold करेंगे, हम उतना ही cash अपने पास बगैर invest किए रखेंगे, जिसका नतीजा क्या है कि ये कैश हमें मजीद प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा होगा. सो दैट मीन्स कैश का होना, इसको हम लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं. सो कैश को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को रिलेटिव एनालिसिस में जब हम देखते हैं तो कुछ रेशोज़ हैं जिनके ज़रिए से वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस करते हैं.
And most common ratios are current ratios, which is simply a relationship of current assets and current liabilities, and an acid test ratio where we reduce the inventories and prepayments out of that. And also we look at what is called the cash cycle and credit cycle to analyze our working capital. So the third component, the third function of a finance manager is to manage working capital. That is to manage inventories, that is to manage receivables, and that is to manage cash. We'll see that what are the instruments, what are the tools which are used to manage all these three major components of working capital. Although we have some other components of working capital, अगर आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती.